Arts, Commerce and Science College, Ahmednagar, and above all, my dear friends, it's a great privilege, it's a great honor for me to be here in front of you. First of all, I must thank you all for inviting me here, and I'm extremely delighted and I'm so humbled and so honored for the wonderful welcome that you all gave to me. I remember it all my life, till the last breath. I will always remember this, and this means a lot to me. So before going further, Apun kasa hai Ahad? Did I say it right? Okay, that's wonderful. So let me say it again. कैसे हैं आप सब? अच्छे, हम हमेशा अच्छे होने चाहिए. हम सब लोग, पूरी दुनिया, हमारा देश, सब लोग अच्छे हमेशा होने चाहिए. यही हमारा कर्तव्य, यही हमारा, the ambition, and that should be the motive of our life. आगे बढ़ने से पहले मैं बस आप सबसे एक सवाल पूछना चाहूँगा. मुझे बताइए, आपके हिसाब से, according to you, what is the biggest and the most precious thing that we all have? Life. हम सबके पास सबसे ज्यादा अनमोल, सबसे ज्यादा कीमती, सबसे ज्यादा प्रेशियस चीज क्या है? लाइफ. राइट? कितने लोगों को लगता है कि जो लाइफ है, जो जिंदगी है, जो हमें भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने जो हमें जिंदगी दी है, जो लाइफ दी है, ये सबसे ज्यादा अनमोल चीज है हमारे पास, सबसे ज्यादा अनमोल. ओके, मतलब मेजॉरिटी लोगों को लगता है. तो और एक सवाल, ये जिंदगी क्या है? व्हाट इज लाइफ? तो आप सब लोग का अलग अलग जवाब होगा. तो क्या ये लाइफ वो वक्त है जो हम यहाँ पे बिताते हैं, मे बी 60 साल? इज इट द टाइम दैट वी स्पेंड ऑन दिस अर्थ, द 60 years, the 70 years or 100 years, whatever it may be? Or is it this, this body with senses, with desires, with needs? क्या ये जिंदगी है? मेरे हिसाब से, life is nothing but sum total of what we do in this span of time. हमारी जिंदगी कुछ और नहीं है, बल्कि जो काम हम करते हैं, जो चीजें हम सोचते हैं, पैदा होने से लेकर मरते दम तक, जो हम हर दिन करते हैं, जो चीजें हम करते हैं, जो हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, जो हम अपने बारे में सोचते हैं, is the sum total of all these actions जो हमारी एक्चुअल में लाइफ है. So life is nothing but what we do. हमारी जो जिंदगी है, ये कुछ और नहीं है, बल्कि वही है जो हम करते हैं, जो हम काम करते हैं, जो हम एक्शंस करते हैं. तो इससे जो मेरा बोलने का ये मकसद था कि अगर लाइफ is sum total of these actions, so this every action actually defines us. ये दिखाती है, जो भी हम काम करते हैं, कि हम कौन हैं, what kind of people we are. क्या हम स्वार्थी हैं? Are we selfish or are we selfless? क्या हम अपने काम में अपने बारे में खाली अपने हित के बारे में सोचते हैं, या अपने पड़ोसी के बारे में भी सोचते हैं, या किसी दूसरे इंसान के बारे में भी सोचते हैं? तो जो ये हमारी ये सोच है, और इस सोच से जो हमारे काम बनता है, the action that corresponds to this thought is actually who we are. फिलोसोफर रहे हैं पिछली सदी में, जिन्हें सार्त्रे के नाम से दुनिया जानती है, जॉन पॉल सार्त्रे. एक एग्जिस्टेंशियलिज्म उनका एक फिलोसफी था. आप कई सारे लोग आप पढ़ेंगे, जब आप कुछ कभी भी नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, जब आप अपनी किताबों में भी पढ़ लेंगे. What he said that life is nothing but an empty canvas. आप में से ड्राइंग कौन करता है, या पेंटिंग कौन बनाता है? ठीक है. तो हमारी जिंदगी एक प्लेन, एक वाइट कागज के या उस कैनवस के शीट की तरह है. और
what kind of figure, what kind of image, what kind of portrait we want to create on this empty canvas depends on what kind of colors we want to fill in that canvas. हमारी लाइफ का जो एक लैंडस्केप, जो एक सीनरी, जो एक पेंटिंग बनेगी, ये डिपेंड करेगी कि हम किस तरह के रंग इस लाइफ के कैनवस में भरते हैं. सो ये सब हम पे निर्भर है कि हम किस तरह की अपनी जिंदगी, what kind of life we want to define for ourselves. क्या ये ऐसी जिंदगी हो जो खाली अय्याशी में, जो खाली स्वार्थ में गुजर जाए, या कोई ऐसी जिंदगी हो जो किसी दूसरे के हित में, किसी दूसरे के काम के लिए, जो उन लोगों के लिए हो जिनका कोई सहारा नहीं. So that is essentially the first point that I wanted to make, that it's very important for all of us to understand what is the key motive of our life. What's it that differentiates us from, say, non-humans? What does it different? What is this one quality, that one thing that differentiates us from animals, that differentiates us from beasts and many other things? I think it's that one thing which we call compassion, जिसे हम करुणा कहते हैं, जो इंसान के पास इसलिए है क्योंकि हम लोग इंसान हैं. हम लोग अक्सर कहते हैं the human being is the best among creations. जैसे उर्दू में, अरबी में से कहते हैं अशरफुल मखलूकात. अब सारे जो भी चीजें हैं उनमें से सबसे यूनिक, तो ये यूनिकनेस हम में आती है क्योंकि हमारे पास एक रीजन है, हमारे पास सोचने का, समझने की ताकत है. We have the ability to think, we have the ability to understand things. So that's the first thing that I wanted to point out here. संदीप जी ने यहाँ पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में काफी कुछ बताया. इनफैक्ट कल we had his death anniversary, the first death anniversary of this great soul, which inspired thousands and millions of people, not only in this country but around the world. I got an opportunity to meet Dr. Kalam when I was in school. तो हमारे कश्मीर में एक बार आए थे वो 2005-06 के आसपास. तो कई सारे बच्चे जो अलग अलग स्कूलों में थे, उन्हें they were invited to meet in a gathering. So the first words that he said, he said that the laws of aerodynamics say that a bumblebee cannot fly. एक bumblebee देखी है आपने? ठीक है. उसका जो weight होता है, okay, उस हिसाब से the laws of aerodynamics say that a bumblebee cannot fly, but it flies because it wants to fly. ये जो want वाली बात है ना, कि हम लोग, हमारे पास वो ability है कि अगर हमारे पास despite challenges, despite problems, if we wish to do something good, if we wish to do something meaningful, there's nothing in this world that can stop us. And you will find hundreds and thousands of examples in our country, in your state Maharashtra, across the world, in which people, despite odds, despite extreme odds which we even cannot think of, they did surmount those problems and made a mark in the pages of history. Last year, जैसे UPSC के हवाले से बोलना चाहूँगा, who was the first ranker in 2014 civil service examination? किसी को नाम याद है जिन्होंने पिछले साल फर्स्ट रैंक हासिल किया था? हीरा सिंगल. Despite having severe physical disabilities, she cleared one of the most prestigious examinations of our country, not only once but multiple times, and in the end scored first position. उनके आसपास भी मेरिट लिस्ट में पड़े. These are, ये हमारे सामने उदाहरण है. These are the inspirations in front of us. This time I was writing my main examination. जब हमारा जो मेंस का एग्जामिनेशन होता है IAS का, मैं
हॉल में थोड़ा सा पहले गया था। अक्सर होता है जैसे स्कूल्स कॉलेजेस में ही एग्जाम होता है, जो यूपीएससी का एग्जाम होता है, तो जो क्लासरूम में नॉर्मली जो लकड़ी की या स्टील का वो जो डेस्क टेबल, नॉर्मल डेस्क टेबल रहता है, मैं देख रहा था कि मेरे जो लेफ्ट साइड में, ऑन द लेफ्ट टू माय सीट, देयर वाज अ चेयर. इट वाज अ नॉर्मल दैट मूविंग रिक्लाइनिंग चेयर. सो सारे बाकी जो सीट्स थी वो नॉर्मल लकड़ी की जो टूटी फूटी सीटें थी, एक बड़ी स्पेशल सी बनाई हुई थी. So I was thinking that who is this special person who has got this such a special seat? So when everybody settled down, I found that there was a lady who sat on that chair, and she must have been pregnant by her 8th or early 9th month. Imagine, these are the inspirations. I mean, what is this thing, that drives people to achieve such levels of excellence, where despite odds, despite problems, you and make sure that you achieve what you have decided to do. और इसलिए एक वर्ड कहा जाता है पैशन. ओके, पैशन लाइफ में होना बहुत ज्यादा जरूरी है. और पैशन से मतलब क्या है? that you should love doing what you do. आप जो करते हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक राइटर हैं, चाहे आप एक सिंगर हैं, if you are an entrepreneur, you are a teacher, you are a professor, you are a doctor, you are an engineer, you are a writer, you are a civil servant, whatever you are, whatever your profession is, you should love doing that. Your heart should be in that work. आपके काम में आपका दिल होना चाहिए. When your heart is in that work, आपको वो कभी काम लगता ही नहीं है. You never think that you're doing actually work. You think that आप इसको enjoy करते हैं. आपका कहते हैं ना रोम उस चीज को enjoy करता है. So there's one more suggestion that I wanted to put forward in front of you. That as youth, it's important for us to identify what's it that we love to do, what's it that that excites us when we do it, and try to identify that passion, and then don't leave any stone unturned, but ensure that you achieve excellence in what you do. Ultimately, it's the excellence that matters. As a country, as a nation, it's not that we only need IAS officers. It's not that we only need IPS officers. We need good doctors. We need good engineers. We need good entrepreneurs. We need good writers. We need good journalists. We need good artists. We need good scholars. We need good researchers. So हमें हर किसी फील्ड में अच्छा काम करने वालों की जरूरत है. So it doesn't matter, आप किस चीज में, आपको क्या चीज पसंद है. जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उस काम में, उस फील्ड में कितना अच्छा करते हैं. How much excellence you achieve in that field. If we look at the world at large today, and our country in particular at present, we are at a very crucial juncture of time. Looking at our own country, on one side, we are generally one of the biggest democracies in the world. We are a young population. More than 65% of our population is below 35 years of age. Right? When it comes to our economy, we are one of the fastest growing economies in the emerging economies in the world right now. Look at the kind of geopolitical or economic cloud that we have at present in the world. That is unparalleled. In the international community, nobody ever can afford to ignore India at present time. कोई भी, whether it's America, whether it's Russia, whether it's somebody in Middle East, somebody in Central Asia, no country can afford to actually, have loose relations with India. Everybody comes forward. We are cooperating with different countries across the world. At the same time, if we look at the kind of transformation that our country is going through, we're trying to build our secondary sector well, we're trying to consolidate our services sector, we're trying to improve our agriculture sector. So a lot of things are happening, which are very good, which are very positive. At the same time, when we look at the scale of challenges that we face as a nation, as a country, they are huge. You might have come across, or you may come across,
charts, a lot of statistics which talks about poverty level in the country. More than 1/5, 20-22% से ज़्यादा जो हमारे population है, that is living below poverty line. और poverty line की जब हम बात करते हैं, it's the bare minimum, it's the minimum possible, income of survival. कि इतनी income भी नहीं है. More than, हमारे 22% जो हमारे लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, उनके पास इतनी इनकम भी नहीं है कि वो सही से, ठीक से दिन में 2 वक्त का रोटी या 2 वक्त का खाना खा सके. Not only that, अभी in the last year there was this social, economic and caste census जो 2011 में हुआ था. इसका कुछ डेटा रिलीज हुआ था. It said that more than 50% of our rural households, they do not have an assured source of income. कि जो हमारे गांव में रहते हैं, उनमें से जो आधे से ज्यादा हाउसहोल्ड्स हैं, उनके पास कोई assured source of income नहीं है. ऐसा कोई सोर्स नहीं है जिससे उनको कॉन्स्टेंटली, उनको रेगुलरली या assured तरीके से पैसा मिल सके. उनको एक दिन काम मिलता है, दूसरे दिन काम नहीं मिलता है. खाली यही नहीं, अब जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि जहां तक हम एक साइड से वी सेलिब्रेट आवर achievements, but at the same time when we look at the gender disparities, they are grave. Look at the under 6, below 6 sex ratio कि जो 6 साल से कम आयु के जो बच्चे हैं, उनमें जो सेक्स रेशो है, that is 918 in our country at present, 2011 के हिसाब से. आपकी जो स्टेट महाराष्ट्र है, in Maharashtra the under 6 sex ratio is 894. मतलब पैदा होते ही हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन शुरू होता है. And after that, in higher education, the disparities are huge. हमारे यूनिवर्सिटीज में, हमारे कॉलेजेस में, हमारे IITs में, हमारे IIMs में, you hardly find 5%, 10% students who are women. लेबर फोर्स की अगर बात करते हैं, अगर 100 महिलाएं if they are in the age group, in the working age group, out of them only 28 are doing a remunerative work. That is, female labor force participation rate in our country is only 28.8%. मतलब अगर 100 लड़कियां हैं या 100 महिलाएं हैं जो उम्र के हिसाब से काम करने के लायक है, काम कर सकते हैं, उनमें से खाली 28 लड़कियां ऐसी हैं जो ऐसा काम करती हैं जिनमें रिन्यूमरेशन मिलता है. ओके, बाकी को हम वैसे काम में लगाते हैं जो नॉन रिन्यूमरेटिव है, जैसे हाउस होल्ड काम में लगा दिया, दिन रात वो घर पे काम करती हैं, लेकिन दे डोंट हैव द रिवॉर्ड, दे डोंट गेट व्हाट दे डिजर्व. इसके कंपैरिजन में अगर 100 लोग हैं, 100 मर्द हैं, 100 मेल हैं जो काम करने की आयु में है, उनमें से मोर देन 82, ओके, 100 में से मोर देन 82 मेल ऐसे हैं जो रिन्यूमरेटिव वर्क है. सो मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज मोर देन 82%. इतना बड़ा डिस्पैरिटी. अगर देश में 50% या 49.5% पॉपुलेशन, 49.5% पॉपुलेशन महिलाओं की है, तो जो हमारे पार्लियामेंट है, जो हमारे असेंबलीज है, उनमें भी रिप्रेजेंटेशन तो इतनी होनी चाहिए. हमारे पार्लियामेंट में, if you look at the representation of women in parliament, that's hardly 11%. खाली 11 से 12% highest that we have achieved till now when it comes to the women, percentage of women who are parliamentarians. States में देखें, only 7% of legislators in state assemblies are women. खाली 7%. ये तो एक साइड हो. इसके साथ साथ NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, एक जो डिफरेंट जो क्राइम्स है उनका कुछ डेटा कलेक्ट करता है. I was going through one of these some statistics. It said in India every 20 minutes one rape occurs, every 25 minutes one kidnapping occurs, every 4 hours one dowry death occurs in India.
this is also, who we are. This is also the other face of where we live. मैंने शुरुआत में कहा कि we are a young country. हमारे पास बहुत युवा population है. I said that more than 65% जो हमारी population है 35 साल की कम से कम आयु की है. More than 65% of our population is below 35 years of age. But जितना भी workforce है इसमें से hardly 5% of our workforce has formal skill education. जो मेजॉरिटी है हमारे पास ये वर्कफोर्स जिसपे हम इतना गर्व करते हैं, दे आर अनस्किल्ड. उनके पास कोई स्किल नहीं है. हर साल every year around 12 million people join workforce in our India. हर साल लगभग 120 लाख लोग अपने हमारी वर्कफोर्स को ज्वाइन करते हैं. But when it comes to jobs, when it comes to opportunities, we don't have opportunities commensurate to that. बच्चों की बात करते हैं. We take great pride in saying that हमने जो quantitative aspect of our education system, जिसे हम cross enrollment ratio की बात करते हैं, out of school children की बात करते हैं, we have drastically reduced the percentage of children which is out of school. Right now, we say that at least something around 97.5% of our children are in school. But at the same time, we forget to think that the 2.5% जो हमें percentage wise बहुत छोटा लगता है, लेकिन इंडिया जैसे देश में जहाँ 1.25 billion population है, वहाँ 2.5% of our children is actually a number in millions. So we still have millions out of school. There are some figures we say that the child labor is somewhere between 12 million to 16 million strong. जो बच्चे स्कूल में होने चाहिए, जिन बच्चों के हाथ में कॉपी और पेंसिल होना चाहिए, लगभग 12 से 16 मिलियन, 120 करोड़, 120 लाख, 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा बच्चे जो अभी भी वो हाथ में पोंछा लेके, जो अभी भी कुछ हजार्डस इंडस्ट्रीज में अभी भी काम करते हैं. ये सब चीजों के बारे में, all the things that I'm trying to tell you about, my only motive, my only objective is that, and I want to give you this insight that as individuals, as youth, as youngsters, whatever we do, we cannot afford to only think about ourselves. चाहे हम सिविल सर्वेंट बने, चाहे हम डॉक्टर बने, चाहे हम इंजीनियर बने, चाहे हम टीचर बने, या हम एक आम नागरिक, आम शहरी, as an ordinary citizen रहे. Okay? We cannot afford to only think about ourselves. As youth, we have to think about all these issues, all these problems, and then decide what's it, how is it that I can make a change, I can make a difference in the world, in the state out there. और ये एहसास अगर हम सब में आ जाए, I'm sure that the day will not be far when we will be one of the most prosperous, one of the most developed, and one of the most peaceful countries in the world.